శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః.
சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழ நம்பினை ஓயுமே என்றார் நம்மாழ்வார். வேங்கடத்தில் உறையும் திருவேங்கடமுடையானை தரிசிப்பதற்கு முன்பாக இந்த திருமலை ஆழ்வாரை தொழுவதே நம் வினைகள் அகல போதுமானது என்கிறார். ஆம், இப்படியாக திருமலையையே ஆழ்வாராக கொண்டாடினார் நம்மாழ்வார். அவருடைய இந்த பாசுரத்தை மனதிற்கொண்டே சுவாமி தேசிகனும் தன்னுடைய தயாசதகம் என்கிற திருவேங்கடமுடையான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை தொடங்கும் போது முதலில் திருவேங்கட மலையிடமே சரண் புகிறார். திருவேங்கடமுடையானே கரும்பு, அவரது தயாகுணமே கருப்பஞ்சாறு, அந்த கருப்பஞ்சாற்றின் பிரவாகமே கெட்டியாகி கற்கண்டு மலையாகிவிட்டது. அதுவே நம் திருமலை. எனவே இந்த கற்கண்டு மலையை சரணமடைந்தால் அதுவே நமக்கு முக்தி தரும் என்கிறார். அப்படிப்பட்ட திருமலையில் நின்ற கோலத்தில் சேவை தரும் திருமலை அப்பனின் அவருக்கும் அவரது உபயநாச்சிமார்களுக்கும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் மூலமாக கண்டு கழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, இப்போது முதலில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. சுவாமி சொற்படி இன்றைய கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் பிராணப்பிரியா பரம பங்கஜ கம்புகண்டம் பிரம்மேஷ வந்தியமரதம் அமிர்தம் பஜாமி भृग्वत्रिकस्य ममरीज मध्ये स्थित्वा सने कुशमये समधीरयन्तं श्रीशास्त्रधारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैक गुरुं प्रसन्नं श्रीमते विघ्नसे नमः भृगुमरीज अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वरदवक्त्राद्या पारिषत्याः परश्वदं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये सर्वतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघान सम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणराजं या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपरे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिरासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंजकर्मणि स्तन्यपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यंजकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासुतप्त शतमानशेषु धरत्यर्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृह्णामि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्य नमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतम्बरणे सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवामञ्जन्दमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि सप्तामृतरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्करकृसमन्वितं जयापतिं संजयेतं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाचारोद्भवं देवं दक्षिणां गमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं महिदान शम्भो वैराजन्ते होदन्यसत्तां प्रयिष्यामि देशो विबुधानामनादर्यामि सस्तान्दनिदां दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायिने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राज्ञमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्त्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोरानिशां यन्तु पापानिशां यन्तु नीतयः
शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोरानि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृतानि पुष्पसे इन्द्रस्य इत्यस्सङ्घाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रमागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्वरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरपदे मिशन्न द्रविणोधारासदे दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविताद्धरात्तात् सवितानस्वपति सर्वदादिं सवितानो रासतान् दीर्घमायुः भद्रङ्गर्णी विस्तृणयामदेमा भद्रं स्येमाक्षपर्यरित्राः स्त्रीरङ्गे स्तुष्टवागं सस्तनोभिर्विधेम देवहितं यदायुः यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुर्वेदोपव्युषम् यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवः स्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रमः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ति अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सृतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानमूर्चे तथातर महेरणाय रक्षसे योमशिवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचितेर्म मातरः तस्मा अरङ्गमामवोयस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पनाहिमा शुक्रेण देवदेत्यते अग्ने कृत्वा कृतोकुम्भ्रणे यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्ते वक्मे स्तनवो वेदपृष्ठाः तजामदन्तस्रमार्त्येषु वजग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनाते वातः प्राणेनेषु रोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धामनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्ते वमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाने रध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सभूतमस्यादि सुदिनं मातरिष्वण पावमानेर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षेणकं सत्पिर्मधूदकं पावमाने स्वस्तिगणेः सुदुःखाहि पयस्वतेः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिनं पावमानेर्तिशन्तनः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तनः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगणेः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिनं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेते सहमा पुनाते सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातुमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैमी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषणं शन्नो अस्तु द्वपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्तां मधोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य निन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्तदिक्माः
सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पात्रघ्याजमणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களே, நின்ற கோலத்தில் சேவை தரும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் கலச பூஜையும் விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து இப்போது அஷ்டச்சக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற மங்களகரமான கைங்கரியத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வேம்கூடும் பாப்பங்கள் எல்லாம் வெந்திடச் செய்வதால் நல் மங்களம் பொருந்தும் சீர் வேங்கடமலையானது என்பது ஒரு தனிப்பாடல். பக்தர்களே, இந்த புனிதமான மங்களமான திருவேங்கடமலையின் மீது கால் பதித்து ஏறுவதில்லை என்று ஆரம்ப காலத்தில் உறுதி பூண்டிருந்தாராம் நமது எம்பெருமானாரான ராமானுஜர். அந்த யதிராஜர் இந்த மலையடிவாரத்திலிருந்தே கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடமுடையானை சேவிப்பேன் என்றாராம். அவருக்காக ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் ரகசியார்த்தங்களை உபதேசிக்க அவரது தாய் மாமனான ஸ்ரீசைல பூர்ணர் என்கிற திருமலை நம்பிகள் தினமும் மலையடிவாரத்துக்கு இறங்கி வந்து ராமானுஜருக்கு பாடம் சொன்னாராம். திருவேங்கடமுடையானுக்கு அனுதினமும் கைங்கரியம் புரிந்து வந்த மகான் அவர். ஆகாச கங்கையிலிருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வந்து எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் அவருக்கு இப்படி தினமும் வருவதால் எம்பெருமானின் கைங்கரியத்தில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறதே என்று கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளேயே ஏங்கிக் கொண்டிருந்தாராம். அதே சமயம் தன் மருமகனான ராமானுஜரின் நிர்ணயத்தையும் கெடுக்க விரும்பவில்லை. இப்படி தவித்த அவரை எம்பெருமான் பொறுப்பானா? அடியவர்களுக்கு அடியவன் அல்லவா வேங்கடவன்? நம்பிகளுக்காக தானே இறங்கி வந்து நம்பிகள் ராமானுஜருக்கு காலட்சேபம் பண்ணிக்கொண்டிருந்த மலையடிவாரத்தில் ஒரு புளிய மரத்தின் அடியில் தானும் ஒருவனாக வந்து நின்று அங்கேயே மலையடிவாரத்தில் நின்று விட்டானாம் பகவான். எம்பெருமானின் திருப்பாதங்களை பிரம்ம கடிகின பாதவோ என்று அன்னம்மையா பாடிய திருவடிகளை அங்கே கண்டதும் அனைவரும் திகைத்தார்களாம். ஓம் யமர்ப்பயந்தமனயோ ஹவர்யோஜோஹிடானர்பதா விராஜன்னே தம்மயதோஷாயஸ்யானாக்னம் விபனானி பதந்து. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரசீருஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி. रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः. शेषाय नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतन निर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुं प्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवामन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातुं महासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोदरेम सूर्याचन्द्रमधामिव पुनर्दधदाज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्ति जानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नामामिवारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा च तार्क्ष्यम् प्रियातवानिश्वरणं प्रबध्ये स्वस्ति सम्बाधे स्वभायन्न अस्ते शुभागं शुभाम्. அந்த திருவடிகள் பதிந்த இடமே அடிப்புலி என்று அழைக்கப்பெற்று இப்போது நாம் அதையே அலிப்பிரி என்கிறோம். திருமலைக்கு நடந்து செல்பவர்கள் முதலில் அடிவாரத்தில் இருக்கும் அந்த திருப்பாதங்களை தரிசித்த பின்னர் தான் மலையேறுவது புண்ணியம். அப்படிப்பட்ட புண்ணிய மலை நமது திருமலை. அந்த திருமலையில் இப்போது எம்பெருமானுக்கு இதோ திருக்கல்யாண சமயத்தில் அவருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் ரட்சைகளுக்கு முதலில் பூஜை செய்துவிட்டு இப்போது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்துக்கு தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, ஆதிசேஷனே இந்த மலைத்தொடராக படர்ந்து ஸ்ரீனிவாசனுக்கு நித்தியவாசம் செய்ய தகுந்ததாக ஐதீகம். அவருடைய தலைப்பகுதி திருமலை, நடுப்பகுதி அகோபிலம், வால்பகுதி ஸ்ரீசைலம் என்றும் போற்றப்படுகிறது.
அந்த திருமலையானுக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இது. இதே திருமலை கிருத்தயுகத்தில் விஷாத்ரி எனவும், திரேதா யுகத்தில் அஞ்சனாசலம் எனவும், துவாபர யுகத்தில் சேஷசைலம் எனவும், கலியுகத்தில் வெங்கடாச்சலம் எனவும் அழைக்கப்பெறுவதாக பிரம்மாண்ட புராணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. குலசேகர ஆழ்வார் திருவேங்கடமுடையான் சம்பந்தப்பட்ட பாசுரங்களில் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணும்படியான பாக்கியத்தை பெறுவதற்கு வேங்கடத்து கோனேறி வாழும் குறுகாய் பிறப்பேனே, திருவேங்கடச் சுனையில் மீனாய் பிறக்கும் விதியுடைய நாவேனே, வண்டினங்கள் பண்பாடும் வேங்கடத்து செண்பகமாய் நிற்கும் திருவிடியேன் ஆவேனே என்றெல்லாம் வேண்டிவிட்டு முடிவாக எம்பெருமான் பொன்மலை மேல் ஏதேனும் ஆவேனே என்று முடிக்கிறார். இந்த திருமலையை அவர் எவ்வளவு உயர்வாக சொல்லியிருக்கிறார் பார்த்தீர்களா? இதில் அந்த ஆதிசேஷன் திருமலையாக படர்ந்து திருவேங்கடமுடையான் நித்தியவாசம் பண்ண தனது மடியை தந்ததோடு அல்லாமல் இதோ வைகானச ஆகமப்படி இந்த ரட்சையிலும் ஆவாகமாகி இருக்கிறாராம். நமக்கே தெரியும் எப்படிப்பட்ட கைங்கரியப்பரர் அவர் என்று. எல்லா வகைகளிலும் கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டிருப்பவர். ஸ்ரீ ராமாவதார காலத்தில் ராமபிரானுக்கு தம்பி லக்ஷ்மணனாக அவதாரம் பண்ணி தனது தமையனுக்கு வனவாச காலத்தில் அவர் பண்ணின கைங்கரியங்கள் அளவிட முடியாதது. சூரிய உதயத்துக்கு முன்பே எழுந்து காட்டிற்கு போய் சுள்ளிகள் கொண்டு வருவதிலிருந்து இரவு தமையனார் உறங்கப் போவதற்கு முன்னால் அவரது பாதங்களை மெல்ல பிடித்து வைத்து அவரை உறங்க வைத்து இவர் காவலுக்கு கண்ணிமையாமல் நிற்பாராம். இதை வால்மீகி அழகாக விளக்கியிருக்கிறார். பக்தர்களே, அந்த தம்பியின் கைங்கரியங்களை கண்ட ராமன் மனசுக்குள் மெச்சிக்கொண்டு அடுத்த பிறவியிலாவது நான் இவனுக்கு தம்பியாக பிறந்து இப்போது இவன் எனக்கு செய்யும் சேவகங்களை எல்லாம் நான் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினாராம். அவ்வாறே ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் ஆதிசேஷன் பலராமனாக அவதரிக்க எம்பெருமான் தம்பி கிருஷ்ணனாக அவதாரம் பண்ணி தமையனை தினமும் சேவித்ததாக பாகவதம் சொல்கிறது. அந்த ஆதிசேஷனே இப்போது இந்த ரட்சையில் ஆவாகனமாகி எம்பெருமானுக்கு எந்தவிதமான திருஷ்டியும் படாமல் இருக்க ஆவாகனமாகி உள்ளதாக கூறுகிறார்கள். பக்தர்களே, நம்முடைய கல்யாணங்களிலேயே திருஷ்டிக்காக ககனம் கட்டும் சடங்கு நடைபெறுகிறதே, இது எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணமாயிற்று. எத்தனை லட்சம் பேரில் கண்டுகளிக்கும் மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாண வைபவத்தில் எவர் கண்ணும் படாமல் இருக்க இதோ அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமானுக்கு அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற பூஜைகளை செய்துவிட்டு இதோ அந்த ரட்சையை அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருக்கரத்தில் இதோ இப்போது சமர்ப்பிக்க உள்ளார். நாமும் அந்த கோவிந்தனை மனதிலே ஒருமுறை தியானித்துக் கொள்வோம். கோவிந்தா கோவிந்தா என்று கோவிந்தனின் நாமாவளியை சொல்வோம். இதையடுத்து எம்பெருமானுக்கு இப்போது துணைகளாக போகும் அந்த தாயார்களுக்கும் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனை கைங்கரியங்களையும் செய்ய வேண்டுமல்லவா? அந்த இருவரும் எம்பெருமானுக்கு இரு கண்களைப் போன்றவர்கள் அல்லவா? சீதேவி தாயாரும் பூமிதேவி தாயாரும் சூரியனையும் சந்திரனையும் போன்றவர்களாம். சூரியன் இருள் நீக்கி ஒளி தரும், சந்திரன் வெம்மை நீக்கி குளுமை தரும். அதே போல இந்த இரு தாயார்களும் எம்பெருமானிடம் சிபார்சு பண்ணி நமக்கு அருள் என்னும் ஒளியையும் வாத்சல்யம் என்கிற குளுமையையும் தருகிறார்களாம். அதோ மகாலட்சுமியான ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் அர்ச்சக சுவாமி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் என்கிற அந்த உபசாரங்களை செய்கிறார். திருவோடு சேர்ந்ததால் தானே இவர் திருவாளானார். ஆகவே அந்த திருவான அந்த தாயாருக்கு இதோ இப்போது முதலில் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து அருகில் இருப்பவளோ விஷ்ணு சித்தர் எனும் பெரியாழ்வாருக்கு திருமகளாக அவதரித்து தனது தகப்பனாரின் மூலமாக எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களை கேட்டு அனுபவித்து பாவை நோன்பு நின்று பாமாலையாலும் பூமாலையாலும் ஸ்ரீமன் நாராயணனையே தன் மணாளனாக கொண்டவள். ஆகவே அந்த பொறுமையின் பூஷணமான பூமாதேவிக்கும் இதை அடுத்து இப்போது அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, தாயார்கள் இருவருக்கும் ரட்சையை
சமர்ப்பிப்பதோடு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இனிதே முடிகிறது. ஆகவே அந்த 2 தாயார்களையும் மனதிலே ஸ்மரித்துக் கொண்டு அவர்களது மணாளரான அந்த திருவேங்கடமுடையானே கோவிந்தனை நாமும் சரணமடைவோம். எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேணும் என்கிற ஆசையில் நாமும் நம்மால் முடிந்த கைங்கரியங்களை அந்த எம்பெருமானுக்கு செய்வோம். நம்மால் இப்போது அர்ச்சக சுவாமியைப் போல கைங்கரியங்கள் செய்ய முடியாதுதான். ஆனால் இப்போது இதோ இங்கே அமர்ந்து கொண்டு எம்பெருமானை தரிசித்து கொண்டு அவரது வைபவங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோமே, அது கூட ஒரு கைங்கரியம்தான். ஆகவே அந்த கைங்கரியத்தை இப்போது நாம் நலமாக செய்வோம். இந்த பக்தி சேனல் மூலமாக அவரது திருக்கல்யாணத்தை அவரை மனதில் தியானித்துக் கொண்டே நாம் இப்போது தரிசித்துக் கொள்வோம். எம்பெருமான் எளிமையானவர். அது மட்டுமல்ல, நம்மால் எளிதில் அணுகக்கூடியவர். எளிமை மட்டுமல்ல, சுலபமானவர், சௌலபியமானவர். இதோ இப்போது அடுத்து நமக்காக அந்த திருக்கல்யாணத்தை செய்து கொண்டிருக்கும் அர்ச்சக சுவாமிக்கும் மந்திரலோபம், கிரியாலோபம், ஸ்ரத்தாலோபம் எதுவும் வராமல் இருக்க மந்திரித்த ரக்ஷையை அவரது கரத்திலும் இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அந்த பிரகஸ்பதி சுவாமி. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான அபசாரங்களும் வந்துவிடக்கூடாதல்லவா? அதற்குதான் இந்த முன்னெச்சரிக்கை. அடுத்து இப்போது எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். அது அக்னி பிரதிஷ்டை. அதை தொடர்ந்தாற்போல ஹோம காரியங்கள். எம்பெருமானே அக்னி புருஷன்தானே. ஆகவே அந்த அக்னியை முன்னிட்டு நம்முடைய அனைத்து மங்கள காரியங்களும் நடைபெறுவது சம்பிரதாயம். அக்னி பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே. ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर् वा वृद्धांशं शुद्धासीर्वान् ममक्ते इन्द्र शुद्धो न आगहे शुद्ध शुद्धाभिरोधिभिः शुद्धोरयं निधारय शुद्धो ममत्य सौम्यः इन्द्र शुद्धो हिनोरयं शुद्धो वृत्राणि दाशिने शुद्धो वृत्राणि जग्निषे शुद्धो वाजं शिदासने ओं मयि देवात्रविणमाजिनन्तां मय्यासेरस्तु मयि देवहोतिः व्याहोतारामणगन्त पूर्वेरिष्टास्याम धर्मासुमीराः मक्यं जिवन्त मम यान हव्याकोत सत्यामनसो मे अस्ते ये नोमानिकाङ्कृतमच्चनाहं विश्वे देवासो आधेभोजदामे देवी षडर्वे रणक्रणोत विश्वे देवास यहवीरयुद्धं महास्महि प्रतिगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन्ने जातवेदो भुवनस्य रेतजिहसञ्जतमसो युज्यनिश्यते अग्निमश्वत्थादिनि हव्यमाहकं शमे गर्भाञ्जनगिन्योमयो भूः घृतप्रदेको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाजरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगितायक्षिदेवानि आयुर्ताग्ने हविनोदिधानो घृतप्रदेको कृतयो निवेधे घृतं पीत्वा मधुचारकव्यं विदेव पुत्रमविरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा ब्रह्मजिज्ञानं ब्रह्मं परस्तादशीमतसृजो वेनावः सबुद्धया पुपमा अस्य विष्टासतश्चयो नमसतश्चिवः ॐ भूब्रह्मणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि आसनं समर्पयामि सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्गरमण्यन्तरादे साधन्यं विदत्यकं दुर्हेकं तस्त्रमणं योदरास तस्मै ॐ भौ सोममावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि भोगं सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोस्तप्तर्हीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओम प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षयिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोस्तु सप्तर्हीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओम प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशुरश पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रथमनात् तच्छित्रेण पवित्रे नमसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपदन्धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डम प्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छाप्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः ओम प्रणया सोमाम प्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छाप्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधेः
ఓం ప్రణయ ఓం ప్రణిత సమ ప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని యజ్ఞకం సకం సాధయంతునః ఇదం వదందేన్ కృతపృష్టావదాగు సహస్రభూషం చిరమానేన్యచ్చతి ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుదావాహయామి రుద్రానావాహయామి ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి అశ్వినావాహయామి పుషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞవిశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిష్ఠనోవామి బ్రహ్మణేష్ఠనోవామి ఇంద్రాకృష్ణనోవామి అగ్నయేష్ఠనోవామి సోమాకృష్ణనోవామి అగ్నయేష్ఠనోవామి సోమాకృష్ణనోవామి అగ్నిశోమాభ్యాం కృష్ణనోవామి ప్రజాపతిష్ఠనోవామి బ్రహ్మణేష్ఠనోవామి ఇంద్రాకృష్ణనోవామి వసుభ్యోడిష్టనోవామి మరుద్భ్యోడిష్టనోవామి రుద్రేభ్యోడిష్టం నిర్వవామి ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమేడిష్టం నిర్వవామి బృహత్యేడిష్టనోవామి మిత్రాకృష్ణనోవామి వరుణాకృష్ణనోవామి ఆదిత్యేభ్యోడిష్టనోవామి అస్భ్యాం డిష్టనోవామి పూష్ణేడిష్టం నిర్వవామి కక్షాకృష్ణనోవామి కక్షదేవత సోమాకృష్ణనోవామి ఔపాసన యజ్ఞాకృష్ణనోవామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వవామి సర్వదేవేభ్యోడిష్టం నిర్వవామి ఆద్యం తృప్యధిస్రగామి చరం తృప్యధిస్రగామి అగ్నే ద్యోతరసి సమితి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరిజగం రక్షాంతరిత అరాతయ ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతయ చిత్పతిస్థాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా వాక్పతిస్థాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా దేవస్థానపదాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః స్వాహా కృతం పూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పృశయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షత ఆజ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేకా చ శతం చ సహస్రం చ ఆయుధం చ నిఖితం చ ప్రకితం చ అర్పుదం చ న్యార్పుదం చ సముద్రస్య మధ్యం చ అంతస్య పరార్థస్య ఇమామే అగ్నిష్టగా సంతే ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నృతయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదరే నమః జనాప్రమే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువ షష్ఠీ శతసహస్రాణ్యగతమక్షయమర్పదమానయ అయంత యత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వ వర్తస్వదేతవర్తకినాస్మాన్ ప్రజగ పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాధీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అస్భ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఉపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భవస్వస్వాహా అదితేన్మమగ్స్థాః హనుమతేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవసవిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనివాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంకర్మణి ఔపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాగచిత్తార్థమతో దేవాదశత్వైష్టమహమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుమా ఓం మతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానరథేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతగతో ప్రదాని పుష్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఘా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతే సూర్యః దివీవ చక్షునాదనగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విమన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సవస్వాహా ఓం భూర్భువస్వస్వాహా అదితేన్మమగ్స్థాః నమతేన్మమగ్స్థాః సరస్వతేన్మమగ్స్థాః దేవసవిదః ప్రాసామిః దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
ఉన్నదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కున మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టలే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తదనంతాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తదనంతాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విఖానసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదం వ్యక్తాక్షప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తమోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణినాజస్య శేషస్య సహస్రఫలామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీకమామన కుముదాంజన పుష్పనంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంటి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధమత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేమపనీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితి వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిమాలితే లోకాలోకాచలమలయతే లవణేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుత్తోదకాక్ష సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్నౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతికిం పురుషహారీనామృతపత్రాశ్వయేత కమాలక హిరణ్యకనమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మ సూర్య జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు దహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాత కాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ముత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశీర్వర్షధస్రావధానే ఏకైక
तिलामकर्षणक्रमेण सर्वरास्य मकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विधा मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य श्री भूनिरासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीमिखनोमनीन्द्रमदानसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशारङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विसृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवस्यमन आप्नवान उर्ववेदलवञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भमीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अजोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरभर्गोणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयार्हेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. அடுத்து திருமாங்கல்ய தாரணம். அந்த திருமாங்கல்யங்களை தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாக மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் வாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பன்றிக்கு நன்றி சொல்லி குன்றின் மேல் ஏறி நின்றால் வென்றிடலாம் குலசேகரனை. நமது தமிழகத்தில் கிராமங்களில் சாதாரணமாக பேசும்போது கூட பழமொழிகளை உதாரணம் காட்டி பேசுவதை பார்த்திருக்கிறோம். அதில் ஒரு பழமொழிதான் இது. பழமொழி என்றாலே பழமையானது, நமது மூதாதையர்கள் சொன்னது என்று அர்த்தம். மேலோட்டமாக பார்த்தால் இது ரொம்ப சாதாரணமாகவும் ஏன் ஏதோ பிதற்றல் போல கூட இருக்கலாம். ஆனால் அதன் உள்ளர்த்தத்தை பார்த்தால் பிரமிப்பாக இருக்கும். இந்த பழமொழியை இந்த சந்தர்ப்பத்தில்
கோவிலில் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தின் போது ஏன் சொல்கிறேன் என்று பக்தர்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பழமொழிக்கும் நமது சீனிவாசருக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் உண்டு. அந்த விளக்கத்தை இப்போது பார்க்கலாம். பிருகு மகரிஷியின் ஆணவச் செயலால் கோபமுற்ற ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி எம்பெருமானை பிரிந்து பூலோகம் வந்துவிடுகிறாள். ஸ்ரீ இல்லாத ஸ்ரீஹரி சோபை இழந்து அவளை தேடி வர நாரதர் மூலம் தம் பிராணநாதரின் நிலை அறிந்த லக்ஷ்மி தேவி தன்னுடைய அம்சமாக ஸ்ரீ பத்மாவதியை பத்ம சரோவரில் தோன்ற செய்து ஆகாசராஜனுக்கு வளர்ப்பு மகளாகிறாள். சீனிவாசனுக்கும் பத்மாவதிக்கும் அன்பு மலர வளர்ப்பு அன்னை மகுளாதேவியின் மூலம் திருமணமும் நிச்சயமாகிவிட்டது. இங்கேதான் ஆரம்பித்தது நாரதரின் லீலை. ராஜகுமாரியான பத்மாவதியை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் போது அவர்கள் அந்தஸ்துக்கு ஏற்றாற்போல நாமும் செய்ய வேண்டாமா என்று கூறி குபேரனிடம் வட்டிக்கு கடன் வாங்கி திருமணத்தை விமர்சையாக நடத்த வைத்தாராம். இதுவும் நாம் அறிந்த கதைதான். இப்போது பழமொழிக்கு வருவோம். திருமணம் என்பது எதற்கு நடக்கிறது? குலம் தழைப்பதற்கு. இங்கே எம்பெருமானின் குலம் தழைக்க உதவி செய்த அந்த குபேரனை குலசேகரன் என்று சொல்கிறார்கள். சரி, இந்த குபேரனின் கடனை எப்படி அடைப்பது? அதற்கு உழைக்க வேண்டும். உழைப்பதற்கோ ஒரு இடம் வேண்டும். அந்த இடத்தை சீனிவாசருக்கு தந்தது ஸ்ரீ வராகப் பெருமான். அவர் இடம் தந்த திருமலையின் மீது தான் நின்று கொண்டு கொஞ்சம் கூட இளைப்பாராமல் பக்தர்களின் கோரிக்கைகளையெல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொண்டு அவர்கள் தரும் காணிக்கைகள் மூலம் குலசேகரனான குபேரனின் கடனை வெற்றியுடன் அடைத்துக் கொண்டிருக்கிறாராம் எம்பெருமான். ஆகவேதான் அதை விளக்கும் வகையில் வராக சுவாமிக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வண்ணமாக முதல் மரியாதையை வராக சுவாமிக்கு தருகிறாராம் பகவான். ஆகவே பன்றிக்கு நன்றி சொல்லி பன்றி வராகப் பெருமாள் குன்றின் மேல் ஏறி நின்று திருமலை மீது ஏறி நின்று வென்றிடலாம் குலசேகரனை, அதாவது குபேரனின் அந்த கடனை அடைத்து விடலாம் என்று இந்த பழமொழி நம்மளுக்கு காண்பிக்கிறது. வேம் என்றால் பாவம், கட்டம் என்றால் எரியும், சலம் என்றால் மலை, பட்டி என்றால் அதில் வீற்றிருப்பவர். நமது பாப்பங்களையெல்லாம் சுட்டு பொசுக்கும் மலைக்கு அதிபதி வெங்கடாச்சலபதி. அந்த வெங்கடாச்சலபதிக்கு இதோ இப்போது நித்திய கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்களே, ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரிகளும் வர்ணித்த அந்த எம்பெருமான் இந்த கலியுகத்தில் திருமலையில் அர்ச்சாரூபியாக திருமலை வாசனாக எழுந்தருளியுள்ளார். அவருடைய உற்சவ மூர்த்தியான அந்த மலையப்ப சுவாமிக்கு நம்முடைய வேண்டுகோளின் பேரில் உபயநாச்சியர்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. அதை இப்போது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எம்பெருமானை மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு அந்த எம்பெருமானுக்கு அனுதினமும் கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு உறுதியை மனதில் எடுத்துக்கொண்டு இதோ இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை நாம் தரிசிக்கலாம். அதிலும் திருமார்பு நாச்சியார் என்று பெயர் பெற்ற ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலிலும் அதன் பின்பு பூமண்டலத்தையே ஆளும் லோக நாயகியான பூமி பிராட்டிக்கு அடுத்தபடியாகவும் கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி இதோ இப்போது அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பதற்கு தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் இந்த இரு தேவிகளையும் மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு அத்தோடு எம்பெருமான் கோவிந்தனையும் நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு இதோ இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசிப்போம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி செல்வங்களை வாரி கொடுக்கும் காருண்ய லக்ஷ்மி. நமஸ்தே துவம் விஷ்ணு பிரியே என்று அந்த தேவியை பிரார்த்திக்கலாம். பூமி பிராட்டியோ நாம் எத்தனை பாபங்கள் செய்தாலும் பொறுத்து கொண்டிருக்கும் க்ஷமா தேவி. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்ற அது கூட ஒரு பழமொழி உள்ளதல்லவா? ஆகவே அந்த பூமி பிராட்டியையும் மனதிலே தியானித்துக் கொண்டு அவர்கள் இருவரும் மனம் செய்து கொள்ள போகும் அந்த மங்கள கல்யாண சக்கரவர்த்தியை கோவிந்தனை அவரது கோவிந்த நாமாவளியை மனதிலே சொல்லிக்கொண்டு இந்த மெய்சிலிருக்கும் அனுபவத்தை இப்போது நாம் அனுபவிக்கலாம். பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் ஒவ்வொரு சடங்கு சம்பிரதாயங்களும் மெய்சிலிருக்க வைக்கின்றன நம்மை. ஆனால் அவை எல்லாவற்றுக்கும் சிகரம் போல இருப்பது எது தெரியுமா? இதோ இந்த திருமாங்கல்ய தாரணம். இந்த திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு பின்னர்தான் திருக்கல்யாணம் முழுமை பெறுவதாக ஐதீகம்.
ஆகவே கன்னியாதானம் நடந்து முடிந்துவிட்டது. இருந்தாலும் திருமாங்கல்ய தாரணம் முடிந்த பின்னர்தான் திருக்கல்யாணம் முடிவுக்கு வரும் என்று நம்முடைய ஆன்றோர்களும் பெரியோர்களும் சொல்லி உள்ளார்கள். அதன்படியே நமது திருமலையானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்திலும் இது முறையாக நடைபெறுகிறது. புஷ்பங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு எம்பெருமானின் திருவடியில் வைத்து மானசீகமான பூஜைகள் செய்து இதோ இப்போது அந்த திருமாங்கல்யங்களுக்கு அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து மானசீகமான பூஜைகளை செய்துவிட்டு இப்போது அந்த திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கு அர்ச்சக சுவாமி கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்வது என்பது நமது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம். பூர்வ ஜென்மத்தில் நாம் என்ன புண்ணியம் செய்திருந்தால்தான் எம்பெருமானுக்கு இது போன்ற கைங்கரியங்களை செய்யும் பாக்கியம் நமக்கு கிட்டும். ஆகவே அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தருள் என்று இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் நாமும் எம்பெருமானை வேண்டிக் கொள்வோம். இதோ முதலில் தாயார்களுக்கு திருமாங்கல்ய தாரணம், திருமாங்கல்ய மந்திரத்தை சொல்லி இதோ இப்போது சமர்ப்பிக்க தயாராகிவிட்டார். प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु। वेलयुनी कल्याण वेदिका కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని
समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणे उपासनाग्नो प्रधान होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविद प्रसुभा ओम अग्निदेव प्रथमो देवता नागुंसोऽस्य प्रजामञ्चतमुच्च भाषात् तदेकं राजावृणो न मञ्जनां निधेयको स्त्रीपुत्रमकन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायताङ्गारः मत्यो दीर्घमायुः असून्योपस्था देवतामस्तबाधा पौत्रमानन्दमभिप्रबुध्यतां यज्ञ स्वाहा इमं मे वृणस्तुदेव मध्यादिप्रणया तामवस्य राजगे स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदाचास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वृणे हवोदृशकं समान आज प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वृणस्य विद्वान् देवस्य हेडोमजासनिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमस्सोषितानो विश्वान् द्वेधागं सि प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्तन्नो अग्ने मम भवते नेतिष्ठो अस्यावशतो व्यष्ट अवजक्ष्मनो वृणकं मृडानो वेहमृडेकं सहमो न येति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासरहव्यमोहिते जानो देहभेजटग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सर्गपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणे उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविद प्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्याम् ओम इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयन्धाराबुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाभूतत्वया वयन्धाराबुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः नमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणे उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादशत्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदप्रसुभा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदर्हेवरं समूढमस्यवागं श्री स्वाहा त्रीनिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो प्रधानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्य स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे विचक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजाग्रमागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः अनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणे उपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदः प्रसुभा यदस्य कर्मणोऽतिरेर्यं जित्वा अन्योन्यमहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वान् सर्वकृष्टकं जुहुतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा
सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदा विचर्ष निस्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धात्रेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाजीवन् चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्तरिक्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोस्येधिषीमहि स्वाहा समितिशतेजोषितेजो मयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा इदन्ति सप्तयो नीरापणत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथ्वी भक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जेर्णं वेदज्जेर्णं ज्योर्जेर्णं पृथ्वीजेर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जेर्णं समन्दाम्बरहिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरुक्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्माहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथ्वीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणेदपितर्पितामहः प्रपितामहश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तां मदितेन्वमुक्ताः नमदेन्वमुक्ताः सरस्वतीन्वमुक्ताः देवतपितप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसदं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षेतामसि मामे ज्येष्ठाः परितो ब्रह्मचो अपामधे ऊर्ध्वं यज्ञं नयनं माजीक्वरदमत्र नमेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुमतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिमङ्गच्छतु नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनम् शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगम् सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषाम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधादनामहेरणाय चक्षसे योम शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूजा संयुक्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूजा संयुक्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूजा समय मेधामय प्रजामय अग्निस्तेजो दधातमय मेधामय प्रजामय इन्द्र इन्द्र दधातमय मेधामय प्रजामय सूर्य भ्राजो दधात मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दासना यकृदन्तमयादेव परिपूर्णदस्ते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत्तकनम्बरस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपातिर्घातमणिं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः इदासकं इदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु।
எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அரியமா புரந்தரி முதலான தேவதைகளை முன்னிட்டு கொண்டு நடைபெறும் லாஜகோமம், அதைத் தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திருஷ்டிகழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கண்ணன் என்னும் கரும் தெய்வம் காட்சி பழகி கிடப்பேனை புண்ணில் புளிப்பெய்தார் போல புறம் நின்று அழகு பேசாதே பெண்ணின் வருத்தமறியாத பெருமான் அறையில் பீதக வண்ணவாடை கொண்டு என்னை வாட்டம் தனிய வீசீரே என்று ஆண்டாள் தன்னுடைய நாச்சியார் திருமொழியில் கண்ணன் அணிந்த ஆடையால் தன் வாட்டத்தை தணிக்க வேண்டும் என்று தோழிகளை கேட்டுக்கொண்டாளாம். அந்த கண்ணனையே கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக கனவில் கண்டு அதை அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சென்ற பாசுரங்களே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை மலையப்பனின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. அடுத்து இன்னொரு இனிமையான நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். பக்தர்களே, திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு பின்னர் நடைபெறும் அழகான கைங்கரியம் இது. அண்டத் தமரர்கள் சூழ அத்தானி உள்ளங்கிருந்தாய், தொண்டர்கள் நெஞ்சில் உரையாய், தூமலரால் மணவாளா உண்டிட்டு உலகனை ஏழும் ஓர் ஆலையிலையில் துயில் கொண்டாய் என்று பெரியாழ்வார் பாடிய எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணம் வைபவம் இது. கண்ணிருந்தும் கண்ணன் சேவை காணாதார் குருடன் அல்லவா என்றார் தேவிதாசன் என்ற பக்தர். இன்று நம் கண்கள் இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை செய்தன. இதோ இப்போது மாலை மாற்றும் வைபவம். முன்காலத்தில் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் மணமகனும் மணமகளும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்வது கூட கிடையாதாம். பெரியவர்களாக பார்த்துதான் பேசி முடிவு செய்வார்கள். கல்யாணத்தன்றுதான் தம்பதிகளும் ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பார்கள். ஆகவே அந்த அந்நியத்தன்மை விலகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருக்கம் ஏற்பட இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை பெரியவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். முதலில் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்பமாலையை அவரது திருமார்பில் நித்தியவாசம் பண்ணும் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்து அந்த தாயார் சூடிக் கொடுத்த அதே மாலையை திரும்பவும் கொண்டு வந்து மலையப்ப சுவாமியிடம் சேர்த்தார். இப்போது அதே போன்று திரும்பவும் அந்த வண்ண புஷ்பங்களாலான மாலையை அர்ச்சக சுவாமி சூடிக் கொடுத்த சுடர்கடியாக பூமி தேவி கொண்டு போய் அவளது திருத்தோள்களில் அழகாக சமர்ப்பிக்கிறார். பக்தர்களே, அவள் சூடி அழகு பார்த்த மாலைதானே எம்பெருமானுக்கு மிகவும் உகந்தது. ஆகவே அந்த தேவி சூடி கொடுத்த மாலையை இப்போது மீண்டும் மலையப்ப சுவாமியின் திருத்தோள்களில் கொண்டு சேர்க்க மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வு இனிமையாக முடிகிறது. எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் மிக 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 முக்கியமான கட்டத்துக்கு வர உள்ளோம். இதுவரை எட்டத்தில் இருந்தே தங்களுடைய கடைக்கண்களால் எம்பெருமானை தரிசித்துக் கொண்டிருந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களை எம்பெருமானுக்கு அருகே கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை நமக்கு தர உள்ளார்கள். இதை அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெறும். மங்கள அட்சதையை தேவிமார்கள் சார்பாக எம்பெருமான் திருமுடியிலும் எம்பெருமான் சார்பாக தேவிமார்களின் சிரசிலும் சொரியும் வழக்கம் இது. தேவர்களே பூமாரி பொழிவது போல இருக்கும். இதன் பின் திருக்கல்யாணம் கற்பூர ஹாரத்தியுடன் நிறைவு பெறும். பக்தர்களே, நாம் இருந்த இடத்திலிருந்தே இந்த எம்பெருமானை தரிசித்து அவரது திருவருள் கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెద్దనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడ పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టెనే विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ